they decided कि यार इनको बंद करा दो, and that was something that we didn't think could happen. But अब customer भी इतने होशियार हो गए because obviously everyone is on the internet these days that they know कि बाहर क्या हो रहा है, कि बाहर लोग कैसे पेमेंट करते हैं, बाहर you tap and go. Absolutely. And it was me on this side and the four of them on that side, four partners from Y Combinator, all successful ex-founders or whatever in their own right. और उन्होंने मेरी धुलाई कर दी इंटरव्यू में. I kid you not. उन्होंने ऐसे सवाल पूछे कि मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था. So I think we were one of the first to allow a business to refund a transaction from their portal. हमारे पास दो choices थे, या तो आप बंद कर दो and say कि खुदाफिज कुछ और कर लेंगे, but या आप figure it out. Yeah. अस्सलाम वालेकुम. फिनटेक सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ सिप्तैन जिवानी. डिजिटल पेमेंट्स की जब बात होती है तो उसमें कार्ड्स की जो एक्सेप्टेंस है उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट्स भी आती है. और ऑनलाइन पेमेंट्स पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा गैप रहा है एक अरसे से. बहुत सारी कोशिशें हुई कि पेपाल पाकिस्तान में आ जाए, बहुत सारे बैंक्स ने पेमेंट गेटवेज लॉन्च किए, और आज जो हमारे साथ गेस्ट है उन्होंने भी एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आज से कुछ साल पहले. एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडर्स स्टार्टअप्स backed by Y Combinator, Ziyad Parekh from Safepay. Assalamu alaikum Ziyad, how are you? Walaikum assalam, good, thank you for having me. Thank you for being here. It's great. So before we start and learn about Safepay, I want to learn about you कि आपने अपना अर्ली करियर कहाँ से स्टार्ट किया, पढ़ाई कहाँ से की, वर्क कहाँ पे किया, या was this the first thing that you just started doing after graduation? So please, if you could explain about your journey. Yeah, बिल्कुल. So I think obviously मैं कराची का ही का हूँ, and I did my education over here. यहाँ से मैं पढ़ाई की, and then alhamdulillah I got the chance to go to the US for my undergrad. वहाँ funnily enough मैंने I think initiate मेरी undergrad degree की थी on the business side. Okay. So my intention इरादा था कि मैं graduate करके वहाँ की कोई बड़ी बैंक में दाखिल हूँ and investment banking की तरफ जाऊँ or something like that. So the tech side had not really hit me yet. Okay. It was around 2009 when I started my college, and if you look back, it was the early days of the iPhone. आपका I think app store जो है had just launched. Okay. Facebook था, but as I was growing, it was a big platform, but there wasn't much going on besides that. So जो एक startup की ecosystem थी in the US was still very nascent. So obviously when I came in, I didn't really think there would be much in computer science or technology, and I didn't really think of going in that direction. But आहिस्ता आहिस्ता as the years went by, मुझे पता चला कि मेरा कोई बैंक में दाखला नहीं होने वाला. I ended up, so I graduated in math and econ. Okay. But it turns out कि जो डिग्री मुझे चाहिए थी बैंक में घुसने के लिए वो दूसरी डिग्री थी जो मेरे पास नहीं थी. Okay. तो मैं थोड़ा फंस गया था कि अब मैं आखिरी साल था, मैं क्या करूं. तो उस वक्त there was there were these things going on. Bitcoin was becoming bigger. New startups were launching. I remember very clearly, I was sitting and reading about TechCrunch tha us waqt. I used to read TechCrunch a lot. Hacker News mein bahut padhta tha. Wahan there was a lot of activity going on in the US in terms of startups that were being launched. So Quora nikla tha, phir Tinder aaya, Snapchat aaya, Instagram tha. So they were all just blossoming. And a company निकली थी Stripe के नाम से at that time. Stripe निकली, तो then we had all of these other companies that came out, Airbnb, Lyft, Uber तो already था at that point. And I realized that the world was going in this direction, that software development was just going to become a massively important part of everyone's life. तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक pivot किया
कि finance को छोड़ के I started scrambling towards understanding कि यार मैं computer science की concentration कैसे कर लूँ before graduation. तो alhamdulillah I got lucky. I ended up figuring it out, or 5-6 courses last semester में लेके I got a concentration. And then I got a job out of college in a small startup, very tiny startup, 3 people. And by this time, you've learned software development? By this time, I had not learned. Okay. I had learned the very basics. उस वक्त jQuery था, Okay. PHP था, Okay. and whatever they taught you in college was very basic. Or they emphasized a lot on theory. Okay. Algorithms की theory, Logics, math के साथ prove करना, ये सब. तो it's a very kind of intense, rigorous coursework, but not geared towards practical implementation. So practical implementation पर बंदा जाए, then you have to teach yourself. So obviously I didn't get a job at Facebook or at Google or Amazon or any of these big tech companies. Luckily I got a job at a 2-person startup as the first engineering hire under the CTO. Okay. And I remember my goal as an employee, as the first hire, was कि यार I just have to stay one step ahead of my boss ताकि वो मुझे काम से निकाले ना. So staying alive. Staying alive. तो मैं I used to study myself, खुद पढ़ता था, खुद अपने आप को सिखाता था, जो भी चीज़ें आती थी नई. मैं ब्लॉग्स पढ़ता था, उस वक्त पर ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोस नहीं थी, तो ब्लॉग्स पढ़ के चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, अपने आप को And what सिखाना. was this company building? Was it like a software company, software house, or was it like a They were product-based building company? Product-based company. So they Okay. were actually building a social network for people to express their opinions through polls. जो आगे Okay. जाके Twitter poll का जो feature निकला Okay. था, they were focusing on something like that. But it taught me a lot of, in the early days at least, कि startup की life जो है कैसे होती है, and how does it eventually grow from something so small, just so nascent, जो एक idea से फिर उसके ऊपर execute करना, iterate करना, customers लेके आना, उसको grow करना. And for me personally कि यार मैं इस दुनिया में कैसे survive करूँ. Okay. तो fast forward, I became a much better developer. But self-taught, so obviously मेरी जो भी थी, it was just what I taught myself, what I learned from the internet. It wasn't anything special. But maths आपका था, तो I think that helped you in software development and building logics and building obviously understanding. Because at the end of the day, software development की basics तो सारी वही है जो आपने पढ़ी हुई है bachelor जिसके अंदर किया तो. So I'm sure that helped you in learning all of that. So सारा self-taught. And till now you are self-taught to this point, like you're learning new languages. And how do you learn now? Like अभी भी ऐसे ही करते हो learn? You're right. I think mathematics में आपको एक चीज़ सिखाता है कि आप problem solve कैसे करो. Okay. Which is exactly the same as programming, कि आपको एक challenge मिलता है, आपको उसको solve करना है. And yeah, तो I went from front end, फिर उसके बाद मैं back end पर गया, back end से mobile developers, app developers, ये सब. And then ultimately whatever I needed to do, वो मुझे करना पड़ा. Okay. और सीखना पड़ा. Okay. Today, unfortunately, I mean, I'm still active in my company as an engineer, not as much as I would like to be. Okay. Alhamdulillah, now we have a team of engineers that I think are more capable than I am. Okay. And they've gone ahead of where I am, but it's still something कि I still try to keep that practice going ताकि मैं ये चीज़ें ना भूलूं. But obviously अब दुनिया तो किधर चली गई, AI तक पहुंच गई है, ये सब, तो I haven't really gone that far, but inshallah, let's see. Okay. I'll so you worked there in US for a couple of years? In total I spent about 10 years in the US. I spent about 7 years on the West Coast in Silicon Valley. Okay. And वहाँ, obviously as an engineer in the US, आपको Silicon Valley जाना होता है, right? It's the birthplace of startups and that whole ecosystem, and where every engineer aspires to be. So I was like, maybe, जाऊँगा, experience this Silicon Valley gold rush जो हो रहा था at the time. And वहाँ I was obviously working as a software engineer for a different company out there. But मेरे अंदर there was always this, I don't know, you can say like a खुजली or something कि मुझे कुछ अपने आप के लिए बनाना है. Right? Okay. Just seeing these other startups come up and
controlling their own destiny, so to speak, and launching products that are solving real world problems. Like mujhe bhi, you know, I want to apply my So how skills did you get and to try. Safepay from all of that, from Safepay Bay was Area? a interesting story. Back to, let's say, my initial finance background or economics background jo tha college mein, I always wanted to build something where there was an intersection in economics and technology. And I was just thinking, you know, like what problems are out there right now that I can build for. America mein, things move so fast that whatever problem you think of, there's a solution for it already. So I was thinking कि यार एक तो चलो मैं यहाँ हूँ अमेरिका में, but पाकिस्तान से मैं आया हूँ, so I felt कि I should try and build something for that market to give back to Pakistan. And I was looking at the current kind of system of payments over there, because to me, I loved Stripe as a company. I loved what they had built, but more importantly, I loved to see what they had enabled in the US. And that was extremely powerful. So there were a lot of startups. Every single startup that had come out in the US would not be able to charge for their product or accept money from their customers had Stripe not been there to give them the technology to do so. And yahan Pakistan mein, as you said in the beginning, hum still PayPal ka intezar kar rahe the. Hum, you know, हमारे उसमें एक ख्वाहिश थी कि ऐसी कोई कंपनी आके हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करे. पर मेरे दिमाग में हमेशा था कि यार क्यों, why can't we build our own solution and solve our own problem just like every other country does? So I decided to pick this problem, and it didn't start off कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा. Again, it started out कि यार चलता कैसा है, you know, how do you put in credit card number or a debit card number onto a website, और दूसरी तरफ से मेरे बैंक से पैसे निकल गए, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे गिर गए, मुझे जो भी किताब जो मैंने खरीदी है वो मुझे मिल गया. How does that whole thing work? So I thought about it from an engineer's mindset कि यार let me learn. So in my spare time on the weekends, I didn't have a life, sadly. काम के बाद मैं ये करता था. And I used to spend my weekends working on this. So aista I built like an MVP or a proof of concept. And you were building for Pakistan, but आप US में बैठे हो. US में बैठा था, building for Pakistan. Were you like talking to any customers, like potential customers, कि यार आपको क्या problem faces आ रही है, या you just building on your own? I was just building on my own. Typical engineering. किसी से बात नहीं करनी, बस कंप्यूटर के सामने बैठ के चुपचाप बनाओ. So in hindsight, maybe that was not the best approach, but at that time I was like, chalo yaar, what's there to lose? But when the MVP got built, I was like, yaar, ab dekhte hain yaar, kisi ka kaam mein aata hai, because to me, I felt that I learned and I had developed something that didn't exist in Pakistan. Businesses, startups jo yahan thi, at the time, again, this was I think 2019. 2019 में यहाँ इतना proliferation नहीं था, तो लोग वर्डप्रेस पर अपनी ई-कॉमर्स स्टोर्स चलाते थे, शॉपिफाई पर थोड़ा बहुत चलता था, वरना डेवलपर्स APIs के साथ अभी they were just starting to work with APIs. So I launched Safepay on this group on Facebook called Pakistan Startups. And I don't know if it's still a thing. I think yes, it is there. अभी भी है. बिल्कुल है. बहुत active है. I think it has more than 100,000 members. So that I owe a lot to that community, because it gave me my start. And very naively I said कि यार मैंने ये बनाया है, and I'm just looking for people to help me test it out. If there is anyone willing, ये मैंने एक open source WordPress का plugin बनाया है, आप इसको install करके let me know कि payment जाती है नहीं जाती. And at that time, I was a nobody. Safepay was nothing. But building a payment gateway or an e-commerce gateway requires you to have some trust in the market. जी ऐसे ही है. आप लोगों के पैसे के साथ ले रहे हैं, accept कर रहे हैं. It's a big responsibility. And if it weren't for these entrepreneurs on Pakistan Startup willing to take a risk on me,
I probably would not be able to take this further. So there's something about entrepreneurs that says कि यार चलो हाँ सही करते बात हैं, है you know, क्या होगा. true So these guys, and actually it's a very interesting fact. I don't know if you know this company called Metric. जो अभी it's a pretty big startup in Pakistan. They do personal finance management. okay Metric का एक co-founder was my first customer on that who tried it. He was doing a completely different store back then. But again, it's like the startup community, right? That helps you out when you need it the most. So from there, it started to gain traction. People started all organically. I think people started recommending it to their friends, and people started but at reaching this out to point me. ये जो आप बना रहे आपने जो MVP किया था was this a payment gateway या was this something else because I remember you were building something else initially and then you pivoted so what was this this Pakistan startup story से पहले भी आप कुछ बना रहे थे if I'm not mistaken That I had built. So that's an interesting thing. मैंने एक iOS और Android की mobile application बनाई थी that allowed anyone in Pakistan to send money to their friends or colleagues to split a bill or pay someone back in case they had borrowed money or something. तो अमेरिका में एक बहुत मशहूर ऐप है Venmo के नाम से. जी Venmo जब मैं अमेरिका में था वो was my most used application probably after WhatsApp or and stuff to pay my friends के यार हम सब dinner के लिए गए थे, pay them back या rent की split ये वो. But so I was like, yeah, this would be great in Pakistan. Okay, if I go out for dinner with my friends, एक बंदे ने सारा bill pay कर दिया, I can just pay him back using this app. So again, from an engineering perspective, मैंने कहा कि यार बनाते हैं. So this was 2017, 2 years before that. So this is P2P. P2P. एक दूसरे को पैसे आप कर रहे. And did you integrate with any payments? Did any APIs exist at that time? It was difficult. Okay. But pay, वो integration obviously समझनी थी, करनी थी. Ultimately, अगर any programmer जिसको करना है वो कर जाता है. सही बात है. Right, तो वो हो गया and I a few of my friends, family downloaded the app and it worked. I could send money to my mom, she could send me pocket money, or my dad could send me pocket money through the app, and I could withdraw it to my bank account. Okay. Obviously all of this was done without me knowing that there's a regulation behind it. And there are licenses, and then there's such a thing called the State Bank of Pakistan that heavily regulates these kinds of things. I was just an engineer and sitting in the US. I was like, bana do. But after that, I realized that, if I'm sending money to you, if I send you 100 rupees, you're going to receive 100 rupees. But there are costs associated with sending that 100 rupees that no one is bearing. तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट हैं वो सेफ पे ही बेयर कर रहा है. तो इस ऐप और इस बिजनेस मॉडल के अंदर एट दैट टाइम कोई मोनेटाइजेशन का रास्ता नहीं था. तो बिजनेस मॉडल फिगर्ड आउट नहीं था कि कैसे पैसे बनेंगे और सस्टेन कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना पड़ेगा उसको स्केल करने के लिए. But that was a stepping stone towards something bigger that you were going to build down the road. Then I thought कि यार ये obviously that was 2017. फिर 2 साल का gap था when I was like यार let's just focus on your job. Okay. ये सब startup छोड़ो. But it's obviously जो एक अंदर खुजली होती है वो जाती तो नहीं है. तो वापस आए. Then I started कि यार let's again pivot, and instead of doing P2P, let's do P2M. वो भी एक obviously मसला है, and businesses that want to obviously accept digital payments, they should be willing to pay to do so. So there is a legitimate business model in this case as well. That's when we made the switch. And in those 2 years as a self-taught programmer, मैंने और कुछ भी बहुत सीखा था. तो पूरी अपनी tech stack भी rewrite की थी from scratch in new languages, using new patterns and all the shiny fancy things that engineers really care about but no one else really understands and cares about. तो वो सब लेके मैंने Safepay launch किया था. Okay. Now I had a decision to make. I was still working
during the day and focusing on Safepay at night. And मुझे डिसाइड करना था कि यार मैं इस पर फुल टाइम फोकस करूं या जॉब पर फुल टाइम फोकस करूं. That's really the crucial decision for any kind of entrepreneur, to take that leap of faith or that jump ke yaar, you leave behind something safe, secure, especially in a country like America, and San Francisco is the most expensive cities in the world, and you go for something that you have no idea if it's going to succeed or fail. But I thought about it in kind of like a methodical way. मैंने सोचा कि यार, if I can raise some funding for this, then obviously it's a sign that I need to go full time on this. If I talk to people and they don't agree that the problem that I'm trying to solve is big enough, और वो मुझे investment देने के लिए तैयार नहीं है, then मैं हाथ just जोड़ के move on to the next one, या focus on my job again. At the time, Y Combinator की winter की batch के applications खुले हुए थे. Okay. And I was a big Hacker News fan. Hacker News Y Combinator का tech publication है कहला दें. They publish the top 20 stories every day. तो मैं हर दिन उसको religiously पढ़ता था कि क्या हो रहा है tech के अंदर. And obviously it was a dream. आपने जितने भी startups देखे हैं, Coinbase, Airbnb, Lyft, all the big startups that you appreciate have all graduated through Y Combinator, Stripe as well. So I was like, मैं भी apply करूँगा. So I applied for the winter 2020 batch and अच्छा खासा application बनाया, सब कुछ किया. My application was accepted for an interview जो उनका होता है. Okay, so the first step was step. And I think that is even a big filter. I think वहाँ पर भी शायद I don't know. I think 10% शायद लोग make it to the interview level. I think 90% are rejected at that point. Till that point. Okay. No, it's very selective. Yeah. And then, but interview का call आ गया था. अब at that time I thought कि यार, this is interview आ गया है. I just have to go and talk to them and explain to them what I've built and how it works, and again engineer के mindset से, और मुझे दाखिला मिल जाएगा. तो मैं इंटरव्यू के लिए गया, and it was me, similar to this thing, it was me on this side and the 4 of them on that side, 4 partners from Y Combinator, all successful ex-founders or whatever in their own right. और उन्होंने मेरी धुलाई कर दी इंटरव्यू में. I kid you not. उन्होंने ऐसे सवाल पूछे कि मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था. And मैं, as I was just trying to save face कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, पूरी दुनिया ले लूँगा. But obviously that's not what they want to hear, and that's obviously not something that's possible to do for a one-person startup. But उसके बाद a couple of days later got the rejection email that जो भी I didn't make the cut, but obviously they encourage you to reapply and refocus and rethink. And so at that point I was a bit obviously demoralized कि यार ये भी गया, तो now there are really no chances. But Safepay on its own over here was continuing to grow. Okay. More and more merchants were onboarding with us. More and more transactions were going through. We were releasing new products, new features, obviously fixing bugs, etc. So that was like, nahi yaar, even if they've rejected me, this is still showing me कि yaar, this is a need that I'm solving, कि मैं without any marketing, without anything, ये चल रहा है and it's growing. So traction वहाँ थी, and you didn't have to do a lot of effort. Customers आ रहे थे and they were using your platform. And at this point, you were a one-man company. At that point, yeah, it was me. Then I reached out to a really close childhood friend of mine, Raza, who is an expert in financial regulations. So he studied in the UK and worked extensively in the UK. वहाँ Bank of England जो वहाँ की central bank है, उसके साथ काम किया है उसने. तो he had very deep knowledge on financial regulations globally. And because UK and Pakistan ke laws are similar in the sense, a lot of that could be transported to Pakistan. He was very interested in joining as a co-founder.
and focusing on obviously the regulatory side that I till this point had not thought about. I was like, yeah, jab aayega dekha jayega. But luckily that's what he did. So I was like, perfect. Let me focus on product and engineering, and you can focus on what you love, which is the regulatory and legal side of things. So then, the second application opened up for Y Combinator summer 2020. And I had obviously gotten rejected, but I was like, yeah, I just want to show Raza how difficult it is. So let's reapply. ताकि मैं इसको दिखाऊं कि यार होता क्या है Y Combinator. People think he was like यार accelerator या क्या है, apply कर दो मिल जाएगा. I was like देखते हैं. तो दोबारा हमने application prepare की. इस बार हमने preparation की, interview की. जब हमें interview दोबारा से मिला था, we prepared कि what रज़ा क्या बोलेगा, मैं क्या बोलूँगा, हम switch कैसे करेंगे. And I think COVID हो चुका था, COVID आ चुका था. I think COVID had started. So I think they were doing remote interviews, if I'm not mistaken. जी remote. So that was a bit more comfortable for an engineer introvert जो मैं हूँ. Like it's much easier to just sit in your office or wherever you are. Wherever I am. और वहाँ से interview दे सको. Exactly. वो भी computer में, computer is your friend. Right. उसमें interview देना. But again, there were 4 of them and 2 of us. And this time we did much better. So from my previous experience and this experience, I knew that the interview went well. Okay. And we had a shot. So alhamdulillah, I think like a day or 2 later, I got a call that we had been accepted into the summer 20 batch. And that was the sign. And it was incredible for us because we were the second company from Pakistan. Okay. And the first fintech from Pakistan. Wow. To get accepted into Y Combinator. So they really, again, Y Combinator took a chance on us. But they also probably recognized, obviously, COVID tha, the numbers that we had were obviously growing. Yeah. And Pakistan was a country that very few people understood at that time in terms of the demographics. Ke yaar, 250 million ki population hai. So it's a big market. Yeah. And China and India China was saturated, India was getting there. This had to be the next frontier where investment was to take place. Did you have to explain them, convince them कि यार पाकिस्तान की market है or is this a big enough market? Because obviously ये जो business है payment gateway का, it's a thin margin business because at the end of the day acquirer को भी आपने जाना है, issuer की भी कुछ है और फिर आपने बीच में एक अपना बनाना है MDR जिसे merchant discount rate कहते हैं. जी. So like उसमें convincing करनी पड़ी कि नहीं ये market बड़ी होगी because उस वक्त तो e-commerce was a small market. अभी भी बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी there's a lot of room to grow, but और अभी उस वक्त भी मतलब payments and online payments were still picking up. तो क्या convincing करनी पड़ी Y Combinator को interview देते वक्त या उनके ये सवाल थे? How did that go? Yeah, interestingly enough, the interview, इनके सब interviews 10 मिनट के होते हैं. Okay. तो आपके पास टाइम नहीं है अपना केस बनाने का या एक्सप्लेन करने का. तो you have to know the facts at the tip of your tongue. And उन्होंने इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं कि उनको पता है कि जब कोई बंदा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है और फिर वो वहाँ से एक एक्सट्रैपुलेट कर सकते हैं कि यार ये मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं. Okay. तो फ्रॉम एन ई-कॉमर्स पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक वो उस मॉडल या उस लेंस से देख रहे थे कि ई कॉमर्स की ग्रोथ कितनी है. वो देख रहे थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की पोटेंशियल कितनी हो सकती है इस मुल्क में. एंड हाउ कैन these two founders capitalize on this shift to digital, not just in e-commerce, but in all aspects of people's lives. B2B payments भी digital हो रही हैं. P2P is obviously now becoming digital. Technology की shift आ रही है that they didn't anticipate, we didn't anticipate, but now we see things like Raast coming in. हमने UPI, India में UPI का effect देखा. So all of these things are happening that will digitize, and if there is a company or multiple companies in a market that are there when these changes are happening, they can then capitalize on these changes. तो वो बड़ी
आगे देखते हैं. I think Okay. they उनकी इतनी training हो गई है that Right. they kind of know. So and that program वो उसने आपको कितना हेल्प किया, बिकॉज एज यू सेड कि फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर भी आपने बहुत कुछ सीखा, सेकंड इंटरव्यू में यू न्यू कि यार पेपर आउट हो गया था कि अब हाँ सवाल क्या आने वाले हाँ तो आपने वो तो अच्छे तरीके से practice कर प्लानिंग और लिया. प्रिपरेशन करके गए थे. बट जो प्रोग्राम इटसेल्फ है, हाउ डिड दैट प्रोग्राम हेल्प यू, बिकॉज वो एक ग्लोबल प्रोग्राम है. जी. तो उसकी जो इंसाइट्स थी या उसकी जो लर्निंग थी, दैट हेल्प यू इन के यार गो टू मार्केट ये करना है. बिकॉज एक चीज़ जो प्रोडक्ट कंपनीज के साथ जो एक चैलेंज आता है वो ये है कि समटाइम्स यू नो वी यू आर बॉक डाउन विद कि यार ये भी फीचर बना देते हैं, ये भी फीचर बना देते हैं, एंड यू ट्राई टू डू एवरीथिंग जो ना इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, एंड यू थिंक यार जब मैं ये लेकर आ जाऊंगा ना तो कस्टमर आ जाएगा. So how does that Y Combinator help you with that, and also how did that help you with fundraising, because you also raised money after that from Stripe. Yeah. So how did that happen? तो Y Combinator का एक motto है या slogan कह लें, build something people want. तो the way you figure out what people want is by talking to your early customers or potential customers and to understand what problems they're facing. ताकि then you can figure out if I solve that specific problem, I can then potentially charge for it. तो अब from an engineer's perspective, it's all about कि यार मैं कौन सी नई technology इस्तेमाल कर सकता हूँ to build this new cool feature that may or may not solve my customers' needs. But I guess what we've learned over the years is the way to think about it is कि आप सोचें कि customer की तरफ से what's the best experience that they could have जो अभी नहीं है, और आप उसको बनाने की कोशिश करें, and then use whatever technology you want to use or have available to you to try and build that. So that's one thing that Y Combinator taught, and in the early days, because you're such a small company, उनका बस यही था कि हर दिन वो हमसे पूछते थे कि आपने आज कितने कस्टमर से बात की. वो डैशबोर्ड मेंटेन करते थे, आपको कहते थे कि यार आप अपनी KPIs ट्रैक करें, आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है वीक ओवर वीक, मंथ ओवर मंथ तो छोड़ दें, 3 महीने का प्रोग्राम था, हर हफ्ते KPIs की क्लास लेते थे. I think उनका वीक ओवर वीक 7% ग्रोथ का टारगेट है, if I'm not mistaken, के as a startup if you've come to Y Combinator then your growth should be at 7% week on week, because that translates into 3x of your growth, yeah, 300% growth in a year. Exponential. And they want that, right? And they try to get you to think of ways to achieve that, कि आप कैसे वो growth को ला सकते हो in a sustainable way. Not कि यार जो आपके पास जो भी कम पैसे हैं वो आप Google Ads पर spend करके ये growth acquire कर ले customers ऐसा. So वो हमने बहुत सीखा. Then obviously they invited YC alumni जो होते हैं that are obviously running their own companies, and they spoke to us a lot about the mistakes they had made when starting a company, ताकि हम वही mistakes ना repeat करें. But it was a fantastic program. I think हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ. Obviously there was one thing कि जो हम product बना रहे थे वो पाकिस्तान के लिए बना रहे थे, but it's a US focused incubator, तो the lessons and the learnings and obviously were all taken from that context. So we had a little bit of कह लें massaging to do कि आप उनकी जो learnings वो आपको दे रहे हैं वो इस पाकिस्तानी की context में कैसे लेकर आके apply करेंगे, उसको localize कैसे करेंगे. But alhamdulillah we had a fantastic time, we learned a lot, and उसके आखिर में they have this thing called demo day. Jahan every startup in the batch has 1 minute to present what they've built or what they're working on. 1 minute. Or what 1 minute, 60 seconds. And then it just goes next. And because COVID था, हमारा batch पहले batch था जिसकी demo day virtual थी. Okay. तो मैं again computer के सामने Zoom के सामने बैठा था, and I had 60 seconds to pitch Safepay क्या है and what our growth has been and what we plan to do, किस market में शामिल है, market की size क्या है, all in 60 seconds.
So that went through, and uske baad we started to get interest from investors. So alhamdulillah, we raised a decent sized round after our YC batch. And one of the investors that I was extremely excited about who came on to support us was Stripe themselves. Okay. And me, I was a big fanboy of Stripe. So it was like a big kind of dream come true almost. So, we got a chance to speak with the founders, the do bhai hain. Okay. And talk to them about what we're building. And unki hypothesis ये है कि क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में इस वक्त नहीं आ रहे हैं, फॉर वट एवर रीजन्स, उनके अलग प्लान्स हैं एक्सपेंशन के या कैपेसिटी के, बैंडविड्थ के. They want to support someone who can take the same mission that they're essentially working on and move it forward in a different market. And we weren't the first company that they had invested in that does payments. हमारे पहले I think कुछ 4 साल बाद अफ्रीका में कंपनी है Paystack के नाम से, उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की थी. But for them to invest in a startup that was working on this thing in Pakistan, I think was the first time they had ever ventured into this part of the world. No, kudos to you. I think it was पाकिस्तान में पेपैल तो नहीं आ सका अभी तक लेकिन आई थिंक स्ट्राइप बैकिंग अ स्टार्टअप गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू एज अ फाउंडर इन पाकिस्तान, जो आपने उनके सामने प्रेजेंट किया. एंड आई थिंक इट्स गुड बिकॉज इट मोटिवेट्स अदर्स के आप यू कैन रीच एंड यू कैन अटेन थिंग्स दैट इफ़ यू विश. अगर आप सही जगह पर है, अगर आप जो ना यू डोंट गिव अप, जस्ट लाइक आपने वाई कॉम्बिनेटर का एक दफ़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के बाद भी फिर से यू वेंट अहेड. यू डिडंट नो कि उसके दूसरे साइड पे स्ट्राइप खड़ा हुआ है, बट स्ट्राइप हैपेंड राइट बिकॉज वाई कॉम्बिनेटर हैपेंड, बिकॉज अदर थिंग्स हैपेंड. सो आई थिंक यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर और भी स्टार्टअप्स है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ना वुड बैक देम. सो वी वुड नाउ मूव टूवर्ड्स द बिजनेस है आपका. सो व्हाट डज सेफपे डू, इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट. How long you've been running, what type of customers do you serve, what kind of products do you offer, and also if you can touch upon के आपके obviously आपने start किया उस वक्त तो पाकिस्तान में banks अपना पेमेंट गेटवे थे उनके, कुछ बैंकों के, आई थिंक ईजी पैसा का था, बैंक अल्फला का था, और भी 2-4 बैंक्स है. तो उस वक्त जब आपने लॉन्च किया तो हाउ डिड दैट लाइक कम्पीट विद देम, और आज तो और भी बहुत सारे आगे. सो व्हाट्स द डिफरेंस नाउ, बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, क्योंकि फिनटेक की स्पेस ऐसी है कि ऑब्वियसली कस्टमर्स की डिमांड अब बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ती जा रही है. पहले जो है ना वो पेज जो है ना वो 4 मिनट में लोड होता था तो कोई मसला नहीं था, ठीक है यार पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है, बड़ी बात है, ठीक है ना, कार्ड में डाल सकता हूँ डिजिटली और ऑनलाइन चल जाएगा. अब क्या एक्सपेक्टेशन है एंड व्हाट यू आर बिल्डिंग टुवर्ड्स, सो दैट बी. बिल्कुल. तो टू स्टार्ट ऑफ विद सेफपे क्या करता है, हम पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं दैट इनेबल्स देम टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स. तो अगर आप ऑनलाइन एज अ कस्टमर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं और आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड या जैज़ कैश ईजी पैसा वॉलेट के साथ पेमेंट करने जाएं, तो जो पूरा टेक्नोलॉजी और पूरी ऑपरेशंस बिहाइंड द सीन्स जो चल रही हैं, जो मैंने आई थिंक एट द स्टार्ट बोला कि यार पैसे आपके अकाउंट से कैसे निकल के मर्चेंट के अकाउंट में जाएंगे, वो हम बेसिकली बना के देते हैं मर्चेंट्स को इन अ वेरी सीमलेस वे. कि मर्चेंट की लेट्स से स्टोर शॉपिफाई पर चल रही है तो हम उनके शॉपिफाई का पेमेंट एक्सेप्टेंस का एक प्लगइन देंगे, या अगर उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है तो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन की नेटिव SDKs हैं. सो वेरी टेक फोकस्ड आई वुड से. plug and play, catered towards developers, developer friendly, etc. But also being cognizant के जो जिम्मेदारी है कस्टमर के पैसों के साथ काम करना, वो भी हम पूरी करें. तो we have a pilot approval from the State Bank for a PSP license. So we're regulated by them, and we have arrangements with other financial institutions, etc. that obviously keep checks and balances. So us tarah se we're
a secure company. हमारी certifications हुई हुई हैं, PCI DSS level 1 and others. हर साल हमारा IT audit होता है, State Bank की तरफ से audit होता है. So they make sure that whoever comes in for a license is thorough and they're top to bottom. अच्छा, they're जब buttoned up. आपने जस्ट टू ऑब्वियसली कट यू ऑफ, लेकिन इस PSO लाइसेंस से पहले भी आपने लॉन्च किया था, तो उस वक्त ये लाइसेंस एग्जिस्ट नहीं करता था जब 2020 में व्हेन यू लॉन्च्ड इट, एंड आई थिंक जो आपने बात की पाकिस्तान स्टार्टअप्स एंड व्हाई कॉम्बिनेटर हैपेंड, तो उस वक्त लाइसेंस नहीं था या रेगुलेशन नहीं थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो एंड आई थिंक यू डिड वर्क विद अ बैंक एट द बैक एंड, हु वाज योर एक्वायरिंग बैंक था आपका, वो आपने चलाया बिकॉज स्मार्ट चॉइस जो है वो खुद भी ऑनबोर्डेड था, वी वर यूजिंग, बट एक दिन जो है ना वो आई थिंक आया कि यार वी कैन नॉट सर्व एनी मोर क्लाइंट्स या this is happening. So what changed? And I think you had to stop your services at that time. So what happened, if you could talk about that, and how did you navigate that, and was it not demotivating कि यार छोड़ दो यार? That was a scary time in our journey. I think it happened literally 1-2 महीने after Y Combinator. Okay. And हमें एक email, उस वक्त हम एक बैंक, पाकिस्तान में एक बड़ी बैंक है, उसके साथ I won't take the name. Sure. I don't want to shame them. Yeah, no. But उनके साथ हम काम करते थे. And जो आप कह रहे थे कि regulations didn't exist, they did exist, I just didn't know about them. So there was obviously mistakes on my end कि I was a engineer at the time, just how can I build cool stuff? But yes, the regulations did exist. The problem wasn't that the state bank of Pakistan told us to stop, or told the bank that we were working with to cut us off. The bank themselves felt that the businesses that we were working with was bringing on too much risk for them, in the sense कि उनको visibility नहीं थी कि हम कौन से businesses के साथ काम कर रहे थे. And there was also obviously कि हम एक तरह से grow कर रहे थे बहुत बहुत quickly, and it was at the same time threatening their own business. So they decided कि यार इनको बंद करा दो. And that was something that we didn't think could happen. Again, being naive on our side. So big mistake and a big lesson we learned. तो उसके बाद I think we spent 1 year in, आप कह लें, purgatory. Okay. ना इधर ना उधर कि हम क्या करें, trying to navigate. हमने बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट्स लॉन्च की थी, बट जो मेन चीज़ था कि यार क्रेडिट डेबिट कार्ड की पेमेंट चाहिए, वो हमारे पास उस वक्त नहीं थी 1 साल के लिए. एंड दैट वाज अ ह्यूज, आप कह लें, जो हमारी जो लीड थी वो हमने गिव अप की थी. Because I think you were one of those payment gateways, I think, जिसके पास customers were just coming in to please sign me up, exactly. I want to use your services. So that hurt the lead that we had. But again, हमारे पास 2 choices थे, या तो आप बंद कर दो and say कि खुदाफिज कुछ और कर लेंगे, but या आप figure it out. Yeah. And because हमने अभी थोड़ी फंडिंग रेज की थी, अब और जिम्मेदारी थी कि यार इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे पास, उनको जवाब कौन देगा. We decided that we would figure it out. So then we went in, we got in front of the state bank and explained to them कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं. वो they ask a lot of these things. And so it's kind of your KYC. Kind of our fit and proper test. Fit and proper test. Okay. वो लेते हैं. फिर उन्होंने कहा था आप आ जाएं, आप लाइसेंस की एप्लीकेशन भर के भेज दें. So we did that. We got लाइसेंस 3 स्टेजेस में आपको मिलता है. पहले आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलती है. इन प्रिंसिपल अप्रूवल के 6 या 7 महीने बाद आपको पायलट अप्रूवल मिलती है. पायलट अप्रूवल के 6 या 1 साल बाद अगर आप सब चीज़ें कर लेते हैं आपको कमर्शियल अप्रूवल मिलती है. तो हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली. इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद भी नो
bank was willing to work with us because they said कि अब तो आपके पास ये लाइसेंस की इन प्रिंसिपल अप्रूवल है लेकिन पायलट अप्रूवल नहीं है, तो आप पहले पायलट अप्रूवल लेकर आए. Okay. 6 महीने और गुजरे उसमें कि हम पायलट अप्रूवल लेकर आए. थ्रू आउट दिस होल टाइम ये ऑब्वियसली ये चैलेंजेस तो थे, राइट, रेगुलेटरी चैलेंजेस थे, लीगल चैलेंजेस थे, बिजनेस चैलेंजेस थे, रेपुटेशन challenges थे, लेकिन we never stopped working on our product. We always kept thinking कि यार there will be a time where we will get through this, and when we get through this we'll have a brand new product set ready that's ready to go. So we kept on working on our product and iterating and building features, and eventually we got our pilot approval, and on the basis of that pilot approval then we felt we were now a legitimate regulated financial entity in Pakistan, जिसके थ्रू हम वीज़ा मास्टरकार्ड के साथ बात कर सकते थे, बैंक्स के साथ बात कर सकते थे, and eventually we were able to stand on our own 2 feet without having to rely too much on any single bank or financial entity to manage such a critical piece of our business model. The lesson we learned was कि यार never be too dependent on someone and always be able to stand on your own 2 feet कि आप किसी के ऊपर आप कोई कुछ reliance नहीं है इतनी ज़्यादा. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह then we relaunched आप कह लें, Okay. With card payments and everything else. So how did you change so what did you change at the back end? Because पहले तो आपको acquiring bank you were using that. तो जब आपको ये pilot approval मिला and then I think you went ahead with Visa जी. for integration. So if you could talk about that कि वो क्या किया, and so that must have been a complete different activity because Visa के साथ directly integrate किया if I'm not mistaken. Visa has this product for acquirers called CyberSource, and CyberSource की अगर आप की वो लेना चाहते हैं let's say अपनी खुद की, then you need to get certain things from Visa and MasterCard. If I go into the technicals, on Visa it's called a BIN, okay, and on MasterCard it's called an ICA. Okay. These are जैसे आपका everyone has a credit or debit card. Sure. So the first 6 numbers on your credit or debit card is known as the BIN number or the ICA number. तो ये हमें लेना था as an acquirer, plug it into CyberSource, पूरी उसकी integration हुई, certifications हुई, लंबा चौड़ा जो process होता है, and then we were able to do our first live transaction as a test कि चल रहा है, पैसे हमारे let's say settlement बैंक के अंदर गिर रहे हैं, वहाँ से clearing के लिए जा रहे हैं messages, merchants को पैसे मिल रहे हैं, तो the full operation we were managing ourselves, जो पहले हम नहीं कर रहे थे. पहले was just a simple integration into a bank's APIs और पूरी operations वो manage कर रहे थे. तो ये पहले आप लोग बैंक की रेल्स इस्तेमाल कर रहे थे, बैंक का ऑप्स था, बैंक की कंप्लाइंस थी. अब आपने ये सारी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फियास्को जो आपके साथ हुआ, तो आपने बोला कि यार मॉडल तो पायलट अप्रूवल मिल गया एंड लेट्स गो डायरेक्ट विद वीज़ा ताकि आपकी डिपेंडेंसी बैंक के ऊपर ना रहे. एंड हाउ डिड दैट डिफरेंशिएट, वो उसने भी आपको क्या डिफरेंशिएशन दिया? एक तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर वो सारा चीज़ें करना, बट उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे क्या है, लाइक फॉर द एंड यूज़र, फॉर द एंड मर्चेंट एंड फॉर द एंड कस्टमर एज वेल, उससे क्या इम्प्रूवमेंट है? I think के main जो चीज़ थी is something that I said at the start कि आपकी एक जिम्मेदारी होती है, and आपको especially अगर आप financial services का एक product build कर रहे हैं, then you need to earn the trust of not only the businesses that you work with but also their customers, so that they feel safe entering their sensitive bank information or credit card information on your payment page या website या जो भी कहला दें. And we had to build that trust. So this was one way. Obviously, this license, it's a costly affair. It's also time consuming. It's not an easy thing to get. But it gives customers and businesses the peace of mind कि यार there's ये business कुछ कर रही है, सही कर रही है. Obviously, they've been vetted. उनकी thorough investigation हुई है. So
that trust factor builds. It allows us to talk to other financial institutions at the same level, and allows us to go to bigger businesses, sit down with them and tell them that we have the backing of the state bank on this. So if there is khuda na khasta something that goes wrong, we will obviously make you whole, but it'll be our neck on the line, Right. and our reputation on the line, that where we don't want to put in jeopardy. So it is a big benefit. And then obviously now, as technology is evolving, especially in the payments landscape, आपका Raast एक आ रहा है, and जो Raast की connectivity है, वो अभी regulated entities के लिए उन्होंने दी हुई है. So as a regulated entity, we have the option or the benefit कि हम Raast के साथ भी integrate करके अपने businesses को offer करें. So it allows you to do a lot of things. How did that, is your Raast there? How would this help merchants and consumers in your context of when you're building Safepay? तो आज आप कार्ड पेमेंट्स दे रहे हो, आज आप वॉलेट पेमेंट्स दे रहे हो, and any other payments, I don't know. I think yes, so do main these two, IBFT या fund transfer है. तो how would Raast change that? Like would that make ऐसे आपको क्या expect है? Adoption बढ़ जाएगी? आपको क्या expectation है कि will it be cheaper? Because Raast is quite cheaper as compared to IBFT card payment, because आज कार्ड की पेमेंट MDR लेने जाओ तो it's a 3% उसके ऊपर लग जाता है, फिर टैक्स भी लगता है. So Raast से आप क्या expect कर रहे हैं, and how would this change the ecosystem? How would this increase the adoption of online payments? So I'm hopeful of for Raast, but if you think about it, abhi from a business's side, वो Raast को क्यों accept करेंगे? Obviously because it's cheaper. Yeah. And because in some ways it's more instant कि आपको जो पैसे हैं, you get it more quickly than you do with card payments. From a customer side, you have to think कि मैं अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड क्यों इस्तेमाल करता हूँ. अब डेबिट कार्ड, टू बी ऑनेस्ट, राइट नाउ आई यूज़ बिकॉज Raast की कोई अभी इंटीग्रेशन लाइव नहीं है, वरना आई वुड यूज़ Raast. There's no difference between money going from my debit card or money going from my Raast ID. I get no benefit. Because दोनों बैंक अकाउंट से निकल रहे हैं. दोनों बैंक अकाउंट से निकल रहे हैं. ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि लोग अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं बिकॉज एक तो उनको अमेरिका में ज़्यादातर पॉइंट्स मिलते हैं, और यहाँ आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं. ऐसा ही है. तो फ्रॉम अ कंज्यूमर माइंडसेट के मैं तो ऑब्वियसली मैं कार्ड तो रख, और इंटरनेशनली चलता है, आप अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया में. फॉर दोज रीजन्स पीपल यूज़ कार्ड्स. इफ़ दैट those same benefits can be brought to Raast, let's say slowly even, I think Raast is obviously way better for our country and for the people using it. It's interoperable. आपको कार्ड नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, या every transaction में आपको confirmation आती है कि मैं करूँ नहीं करूँ. So there are a lot more benefits from a business's side. From a consumer side, it's essentially the same thing. But from a business's side, they will themselves want to accept Raast over card payments. Okay. अब card payments will continue to exist because जो यहाँ के merchants हैं, उनके customers पूरी दुनिया में होते हैं. जैसे I think आपके भी customers पाकिस्तान से बाहर होते हैं. उनको आप कैसे बेचोगे? Through their credit and debit cards. Right. तो international customers के लिए card payments will continue to exist. But domestically, if done right, I think you'll see a drastic shift in people choosing to pay with Raast. Got it. अच्छा, एक जो चीज़ हम देख रहे हैं कि obviously there are a lot of payment gateways out there apart from yourself. तो और सब similar offerings दे रहे हैं. तो एक कस्टमर है, एक मर्चेंट है, ही इज़ थिंकिंग कि यार मैंने अपना ई-कॉमर्स है एंड आई वांट टू एक्सेप्ट पेमेंट्स थ्रू कार्ड, थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट मोड्स. तो आपका व्हाट इज Safepay ऑफरिंग व्हिच इज़ डिफरेंट देन एनी अदर? इज इट द प्राइस पॉइंट, इज इट कन्वीनियंस, इज इट एक्सपीरियंस? क्या चीज़ है जिसकी डिफ्रेंशिएशन आप करते हो? बिकॉज एक और चीज़ जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि
कंपनियां जो ना वो 2-3 पेमेंट गेटवे भी लगाई हुई होती है उसने. तो इज दिस राइट स्ट्रैटेजी फॉर अ मर्चेंट टू गो विद मल्टीपल मर्चेंट ऑप्शंस? ये क्यों है और ये क्या ज़रूरत है कि हम मल्टीपल भी लगाते हैं, और एक जो नया फर्स्ट टाइम लेने वाला है वो कैसे डिसाइड करे कि यार किस जो ना पेमेंट गेटवे पे जाना है? Yeah, that's a good question. I think जब when we launched, जब हमने शुरू किया था, at the time हमारी फोकस ज़्यादातर कस्टमर एक्सपीरियंस पर थी कि कस्टमर के लिए आइडियल पेइंग एक्सपीरियंस क्या है और मर्चेंट के लिए आइडियल एक्सेप्टेंस एक्सपीरियंस क्या है. तो आई थिंक वी वर वन ऑफ द फर्स्ट to allow a business to refund a transaction from their portal. Okay. जो which sounds basic कि यार मुझे कस्टमर को पैसे वापस करने हैं लेकिन मुझे ईमेल लिखना पड़ रहा है मेरी बैंक को कि आप प्लीज़ ये कस्टमर के पैसे वापस कर दें. Why, if the technology supports it, why can't I just refund the money back? So the technology obviously supported it, which is why we built it and integrated it and launched it. So we always thought like that, like how can we and then tokenization jab aaya tha, we were one of the first gateways to allow customers to save their cards ताकि आपको हर बार वही कार्ड रिपीट एंट्री ना करना हो. और हमने ये भी किया था कि आप अगर एक बार SafePay पर सेव कर दें तो any merchant that uses SafePay, you can use that saved card on that merchant. So we created a network of paying customers. So we always thought like that, yeah, what's the best customer experience? And then we worked back and built it out. And I think when our competitors started seeing this, that's when they also started focusing, अच्छा यार customer experience भी कुछ चीज़ होती है. And we saw this shift कि पहले वो एक पुराना किस्म का UI या होस्टेड पेमेंट पेज आपको दे देते थे, कस्टमर सर्विस भी आपको मिलती नहीं थी. बट आई थिंक बिकॉज वी वर लाइक नहीं, हमें कस्टमर सर्विस देना है, हमें नेक्स्ट डे सेटलमेंट देना है, हमें प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस पर और डेवलपर पर फोकस करना है. तो ये चीज़ें हमने जब की थी तो आई थिंक वी रियलाइज दैट वी हैड अ डिफरेंशिएटर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट. सो आई वुडेंट से कि हम एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है दैट इज़ राइट फॉर एवरीवन. It's definitely not right for everyone, Okay. but it's right. It's generally more expensive than what you can get or what you can negotiate from the other players in the market. But it's also definitely better. So you get the benefit that The value for money. value for money. तो आप कह रहे हैं आपका MDR ज़्यादा है बाकियों से? हमारा MDR ज़्यादा है. Okay. But the product. But the experience that you offer, the support that you offer comes at a cost. Yeah. That's what you're saying. But at the same time, because हमने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो for a business, you see those results in higher sales. Okay. तो आपकी rejections इतनी ज़्यादा नहीं होती जो दूसरों के साथ होगी. और अगर rejection भी होएगी तो उसका जवाब हम देंगे कि क्यों हुई थी. Well, you will know it's a genuine reason why Exactly. the card was declined. And then we will also give you suggestions on how to tell your customer कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा. There's also training involved and education involved that we provide. But ultimately it's because हमारी एक I guess ethos है कि हम fintech में ज़्यादातर tech पर focus करते हैं. Yeah. We want to differentiate ourselves through that. तो अगर आप developer हैं, आप documentation किसी की उठाएंगे, अगर आप बैंक या की तरफ जाएंगे तो आपको एक मोटी मैनुअल दे देंगे, बोलेंगे कि यार आप जाएं. अब iOS, Android, Flutter पर इंटीग्रेट करना है, खुद करें या WebView के थ्रू करें या जो है वो है. But for us that status quo is never enough. So we're seeing now कि पाकिस्तान में भी सब apps की तरफ जा रहे हैं. I think SmartBenefit has an application. A lot of new startups are going mobile first, and they need ways to obviously collect payments from their customers.
But अब कस्टमर भी इतने होशियार हो गए बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज ऑन द इंटरनेट दीज डेज दैट दे नो कि बाहर क्या हो रहा है, कि बाहर लोग कैसे पेमेंट करते हैं, बाहर भी यू टैप एंड गो एब्सोल्युटली एंड वो यहाँ नहीं आया है. सो दे वांट दीज थिंग्स. जो आप कह रहे थे कि कस्टमर की डिमांड एंड देयर विशेस इज ग्रोइंग रैपिडली एंड एज अ कंपनी यू हैव टू कीप अप विद दैट. So aware of trying to also stay with this changing customer landscape, and jahan habits badal rahi hain, we're also adapting, and we have that ability because we're still a small company. हम अभी तक स्टार्टअप की माइंडसेट में चलते हैं कि remain adaptable, राइट. be open to change, learn from your customers, and focus on the product and the user experience. Cool. Zabardast. I think we have more than 1 hour. Actually, we've hit Really? more than 1 hour. Yes, already. Time flies. But last few questions. So, COD, जी. cash on delivery, अभी भी किंग है. अभी भी कैश किंग है. अभी भी लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो ई-कॉमर्स स्टोर पे जाए और वो वहाँ जाकर जो है, या कहीं से भी वो करते हैं तो वो दे वुड प्रेफर टू पे थ्रू कि यार चीज़ मेरे घर पे आ जाए तो फिर मैं उसको कैश दे दूंगा जो राइडर आया है. हाउ आर यू टैकलिंग दैट? डू यू थिंक इसको रिड्यूस करने का कोई तरीका है? आर यू रनिंग एनी अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर योर मर्चेंट्स? क्या मर्चेंट्स को अपने एंड पे कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है जिससे ये इंक्रीज़ हो सकता है अडेप्शन टूवर्ड्स ऑनलाइन पेमेंट, या और कोई चीज़ करने की ज़रूरत है इकोसिस्टम में अंदर, यानी जो स्टेट बैंक है या जो दूसरे बैंक्स है, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है टू मूव, या लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ को कुछ करने की ज़रूरत है कि मोर पीपल मूव टूवर्ड्स द ऑनलाइन पेमेंट्स? बिकॉज प्री पेमेंट्स, इफ़ यू लुक एट इट, इट्स मर्चेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है. कैश फ्लो आ जाता है आपके पास. जिस दिन आपने पेमेंट की उसके नेक्स्ट डे, एक दिन या 2 दिन बाद मर्चेंट के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. वो शिप भी कर देता है. तो लेकिन उसको चीज़ें पैसे मिल जाते हैं. वहाँ लॉजिस्टिक्स पे जाएगा, लॉजिस्टिक्स में चीज़ पहुँचेगी, फिर उसको पैसे मिलेंगे. तो इट इज़ अबाउट 5 डेज़, 4-5 डेज़ का लैग है. सो हाउ कैन वी रियली, एंड आपको क्या लगता है? वैसे तो कैश मुझे तो नहीं लगता कि कहीं जाने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू लाइक एंड. ऐसा नहीं है कैश ऑन डिलीवरी ख़त्म हो जाएगी. बट व्हाट इज़ इट दैट यू आर सीइंग एज अ ट्रेंड? क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज करने की ज़रूरत है? मर्चेंट को क्या अडाप्ट करने की ज़रूरत है? जी, you're right. कैश अभी कहीं नहीं जाने वाला. And I think for a variety of reasons, it still obviously serves a purpose कि आपके पास जो फिजिकल कैश है, जो आई थिंक सोच है कि यार कैश मेरे बिस्तर के नीचे होना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम, वो मेंटालिटी अब नहीं जाने वाली एनी टाइम सून. बट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, व्हेन दे सेलिंग ऑनलाइन, देयर इज़ नो डाउट कि they prefer digital payments for the reasons you said. उनको next day पैसे मिल जाते हैं, they can start fulfilling the product to the customer. Cash on delivery, I think, ज़्यादातर popular हुआ for a few reasons. पहले digital payments की infrastructure इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, and logistics या last mile delivery की infrastructure मजबूत नहीं थी. And when those two things aren't strong, आपका customer trust is zero. Customers obviously want to buy things online. That's why कर रहे हैं. Cash on delivery is their default के, क्योंकि उनकी mindset ऐसी बनी है कि यार मुझे product नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं prepayment नहीं करूँगा. But over the past 3 years, that has evolved. हमारी 3PL has become much more stronger, and digital payments have become stronger. But I still think there is a lack of education and awareness that should be an industry effort. Obviously, part of that responsibility is on us, and we haven't done a good job of it. But generally, I think there should be more awareness. And I've tried this out at my own house. So मैं मेरे घर में मार्केट से ग्रोसरीज वगैरह मंगाता हूँ, एंड I'm obviously at work, so I can't go during the day to get the groceries. Sure. तो what we did was कि पहले हम obviously कैश दे देते थे कि यार यहाँ मार्केट से लेके जो भी फलाना है वो लेकर आओ और पर्ची ले आओ. But what we did now as an experiment was कि एक इजी पैसा अकाउंट खोला.
ईजी पैसा अकाउंट में मैंने थोड़े बहुत पैसे ट्रांसफ़र किए महीने के खर्चे के। ईजी पैसा को बोला कि यार मुझे एक डेबिट कार्ड भेजो। तो एक डेबिट कार्ड आया, मैंने डेबिट कार्ड मेरे चौकीदार को पकड़ा दिया और मैंने सिखाया कि यार ये डेबिट कार्ड का पिन है, सही है। आप जाओ मार्केट जाओ, अगर वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करता है तो आप उसको दो, वो आपको पूछेगा पिन क्या है, आप पिन एंटर करो, वो एक रिसीट आपको देगा, वो रिसीट वापस लेकर आओ और चीज़ें वापस लेकर आओ। एंड दैट वर्क्स। जब भी महीने में लेट्स से पैसे, एक तो आई नो कि ट्रांजैक्शन स्पेंडिंग किधर हुई है एग्जैक्ट टू द पैसा। एग्जैक्टली मैं कार्ड अगर चोरी हो गया खुदा ना खास्ता, मैं वहीं का वहीं फ्रीज कर सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ, नया कार्ड भी इशू करवा सकता हूँ जो कैश के साथ नहीं होता। अगर मेरे कैश गुम गए या चोरी हो गए मैं नया कैश तो कॉल नहीं कर सकता। एंड उनकी तरफ से भी एजुकेशन हो जाती है कि यार ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, जो यू नो पॉसिबल है मार्केट में। सो these kinds of things I think need to happen more in the market, because digital payments, even though you're prepaying, are generally safer because खुदा ना खासा आपको प्रोडक्ट नहीं मिला या गलत मिला या टूटा हुआ था रास्ते में, जो भी, बैंक को फ़ोन करके बोलें कि यार मेरी ये पेमेंट आप डिस्प्यूट कर दें, और आप डिस्प्यूट करेंगे पैसे आपको वापस आ जाएंगे, जो कैश ऑन डिलीवरी में नहीं हो सकता। राइट तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मर्चेंट और कस्टमर के बीच में डायरेक्टली है। बिल्कुल। उस पेमेंट गेटवे या ऑनलाइन पेमेंट करने का फ़ायदा ये है कि एक थर्ड पार्टी है जो कि ये एक आर्बिट्रेटर टाइप कह सकते हैं, या इस चीज़ को देख रही है कि यार कोई अगर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है तो वो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी से पूछ सकती है कि भाई ये चीज़ आपने सही भेजी थी नहीं भेजी थी, उसका पूरा प्रोसेस को फॉलो कर सकती है, विच कैन नॉट हैवन इन कैश ऑन डिलीवरी। उसमें फिर मर्चेंट के ऊपर है, मर्चेंट आपको रिटर्न करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर इज दिस, अब हो रहा है, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल आर स्विचिंग, एंड वी हैव आई थिंक ऑब्वियसली सादा पे जो नया आया है, नया पे आए हैं, Easy Paisa and Jazz Cash have also now revamped themselves to a certain extent, और बैंक्स ने भी बहुत कुछ डिजिटाइजेशन पर फोकस की है। तो जहाँ हमारी कार्ड्स की मार्केट है, लेट्स से आई थिंक 60 मिलियन डेबिट कार्ड्स एंड अबाउट 2-3 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स, वो भी ग्रो कर रही है, एंड वील स्टार्ट टू सी दिस मे बी स्टैग्नेट, बट आपकी रास्ट आईडीज़ की इशुएंस बहुत ऊपर जाएगी, बहुत तेज़ी से जाएगी। एंड व्हेन पीपल हैव रास्ट आईडी के यार, और उनको QR कोड सामने दिखा दो कि यार आप QR कोड से पिक्चर लेके सेंड कर दो, देन आई थिंक वो ज़्यादा डिजिटल के ऊपर चले जाएंगे। माय लास्ट क्वेश्चन, सो फ्यूचर क्या है सेफ पे? व्हाट इज इट? आर यू गोना स्टिक विद द फोकस एरिया ऑफ बिल्डिंग द पेमेंट गेटवे, इम्प्रूविंग इट, एनहांसिंग इट, या और कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हो सेफ पे के अंदर? आर यू लुकिंग एट एनी अदर यूज केसेस, एनी अदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यू वांट टू सॉल्व? So for us, I think it's pretty straightforward. We want to enable more and more commerce to happen online. जो between a business and a customer, or a business and a business, or a government and business, or जो भी, as long as we're able to enable more of that and play our part in that, we're working towards achieving our mission. And for us, obviously the job's never done, because we hope that economy will continue to grow, and there'll be more and more use cases that come up that we learn about, that we can get the opportunity to build on. Because right now, obviously companies like yours and a bunch of others use Safepay to process their payments. And whether it's like a small company or a medium-sized company or a big company, to us they're almost all the same, because we treat each company the same. But at the same time, the interesting or the exciting thing, I would say, for me in particular, is that the biggest company to come from Pakistan and use Safepay hasn't even been built yet. So we're always hoping that we can encourage the next
Sure. wave of startups to think ahead and start their own companies. There are a lot of problems in this country that need to be fixed through technology, and we have a lot of smart people that can do that. And we want to just play our part in enabling those companies to be able to thrive and exist, and let them focus on solving their problem. And whenever they think about accepting payments or selling what they've built, let us handle it, because that's what we were here for. Amazing, Ziyad. Thank you for your time. बहुत insightful था. And thank you everyone for watching this episode. We'll be back next time with another fintech episode. Thank you. Thank you.